इसको 30 डेज तक हम ट्रैक करते हैं. I know many successful option traders who are making six figures on a weekly basis from option trading, and it's not like they never lost. That's going to be important. And the second factor is SBI. That's a mover in terms of its numbers. You normally get a big move out there. And just looking at the counter yesterday, it seems the street is factoring in, maybe a subdued set of numbers, just going by the price action that we saw yesterday. So the numbers are not too bad, then maybe the stock doesn't get such a hard hit. We'll keep an eye on SBI at around 2 p.m. I think we should get those numbers. That's going to be the important one. The stock that I'm tracking today is Avalon Tech. Stock is corrected close to around 30%, I think, from the recent peak. All this in a matter of a month or thereabouts. It went dancing away, and then, in fact, from the peak of around 1,000 rupees, it's come down to around 700 rupees. The numbers look pretty good. It beat consensus estimates by close to around 10%. The EBITDA numbers around 35 crores, which is the best that we've seen in a quarterly performance, and the margins as well in excess of 10%. So, good set of numbers. Valuations at around 50 times. I'll keep an eye on this stock because of the correction we've seen, because the numbers are pretty good. And the valuations not extremely expensive, just trading at around 80, 90 times earlier. So at around 50 times, we'll keep an eye out on this set of numbers. Okay, Avalon Tech is going to be on the radar as well. Let's start off then with the equity call of the morning. Surendra Goyal Citi says, headline trends in the third quarter of the current financial year so far are in line with subdued expectations, with EBITDA growth at 5% year on year. He says misses and subdued earnings in consumer and energy, while healthcare, industrials and utilities continue to deliver robust double-digit EBITDA growth. He says financials have reported largely double-digit operating profits or earnings growth, slightly ahead of estimates. And he adds that with a pickup in central government's capex in the past few months and budgetary support to consumption, growth should pick up. Surendra says after a 10% decline from the peak with valuations at about 19 times forward earnings, FI positioning at the... Also, since the last time we spoke, there's, I think, been a few things dominating, right? The weekly news cycle has changed, and how there's deep seek thrown in there somewhere as well. What's the dominating driver over the next few weeks, Lynn, according to you, for global equity markets, in your opinion? So thanks for having me. I think probably the biggest one still to watch would be tariffs. A lot of that has been delayed, not all of it, but some of it. And I still think that's probably the biggest wild card to watch in the weeks ahead, the months ahead, perhaps the rest of the year. We'll see how that timeline goes. I think that's very big. I also think one of the ones that went under the radar is the recent announcement by the Treasury Department. So the new Treasury Secretary used to be critical of the prior Treasury Secretary's policy of issuing a lot of treasuries on the short end of the curve, so excess T-bill issuance during this time of heightened deficits. And yet he signaled so far that they plan on continuing that policy in the first half of this year, which all else being equal is fairly good for liquidity. And that's probably under the radar, another thing to watch for markets, because as long as that kind of pro-liquidity policy continues, it offsets some of the ongoing tightness from the Fed and is, all else being equal, pretty good for financial markets. Lynn, so, how are you expecting now U.S. equities to shape up
they've been trying to withstand all these confusing headlines on trade wars, tariffs, etc. But largely, the up move has been intact, at least so far. Do you see more of the same? I do. I think that I'm less likely to expect as strong of a year for 2025 as we saw in 2023 and 2024. But there's valuations are mixed across the board. So there's a lot of valuation bubbles in some of the more defensive assets. There are stocks like Costco and Walmart trading at 50 or 40 times earnings. There are other tech companies trading at pretty reasonable earnings, in the 20s earnings multiples and elsewhere. And liquidity conditions look pretty good. In addition, the debt ceiling ongoing issue in the United States is ironically pretty good for liquidity while they sort that out, because it potentially means the Treasury has to drain some of its cash into the system, in addition to them not wanting to issue extra coupons at the current time. So with liquidity conditions looking decent, the biggest wild card still is tariffs. We could have any number of disruptions among large cap equities, but when we look at financials, they came in pretty strong. And so I think this is probably going to be a choppier year, given more headline risks and things like that. But I wouldn't say there's major cause for concern yet. All right, Lynn, that's $1 million question, right? What Mr. Trump is going to do next with regard to tariff as well as policies. So we'll have to wait by for that. But what about coming back home to the Indian markets? We had discussed this in the past that India was in favor a few months ago, while China, Latin American markets were ignored. From the emerging market basket, given that the Indian markets have pulled back as well, how are you viewing it? What's the preference out there? And in India, I think you were looking at financials because valuations, well, they were more palatable. Your view now? Yeah, I'm still generally pretty constructive on the Indian market. Obviously, the valuations are higher than many other EMs, but generally speaking, stronger fundamentals, at least long term, to go with those higher valuations. India is also, at least at the current time, less in the crosshairs of some of these potential tariff announcements. There's lower overall export risk to the U.S. in terms of the size of the numbers compared to China, compared to Canada, compared to Mexico. And so that keeps India fairly well positioned in this year where there's a lot of headlines that investors can wake up to and find various disruptions on their positions. It doesn't mean that there's no headline risk, but overall, I think it's rather well positioned and still has all the structural uptrends in place. I think that's a good point that you make. By the way, Lynn, there's been this constant chatter. We don't have any timelines on this, right? We've seen some. I don't know what to make of it. The news flow out of the Middle East, right? But at least there is a ceasefire, and we'll see what happens next. But Russia, Ukraine, there is a summit which has been planned for some time, and apparently there's a plan which is going to be unveiled next week. How significant and is it going to be for asset markets, for oil prices, and generally the environment for equities? If that conflict also gets, if there's some sort of a ceasefire. So I view it as obviously very consequential for human lives. I think the impact on financial markets might be smaller than assumed because it's already had a lot of time to absorb in markets. I mean, oil's trading well off its highs it experienced back when the war began. Generally speaking, a lot of Russian oil is still finding its way to the market. And while this can reduce some of the tail risks in the oil market, I generally view it as probably one of those more the news events, which is to say that can take away some of your uncertainty once it happens. But I don't view it as a major market driver at the current time, even though it is, of course, a very significant geopolitical ongoing issue. Okay, all right, Lynn, we will wrap it up on that note then for today. Thank you very much for joining in and giving us some perspective on how you're reading the situation right now. All right, let's move on. Lots of corporates and lots of commentary coming up on the show today. So here's the lineup. At 8:30 a.m., we'll have Deepan Mehta joining in. We'll talk about a lot of these results that have been pouring through and big ones that are expected today. At 9, we will be speaking with the management of Sula Vineyards, talk about their third quarter performance and demand trends going forward. At 9:20, our market master of the day is Ravi Dharamshi. We'll find out what he makes of the market now. Is this stability going to last? What do you do in this kind of an environment? At 9:30, we are in conversation with the management of Birla Corporation. We also will be speaking with Mangesh Padang of Centrum Broking, talk about
Birla's numbers and of course the outlook for the cement sector overall as we're going ahead. After that, we have the management of IKS Health joining in to talk about their outlook post the third quarter. At 9:50 a.m., Rahul Bothra of Swiggy joins in. Swiggy, like I said, could be the big debating point today, big talking point, and we'll see what their outlook is after the third quarter. And then in our special segment, it's the economy. Lata today is going to be conversation with Chaitanya of Morgan Stanley about the US-China tariff war and the upcoming RBI monetary policy. आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। On the margin front, what you said earlier, you basically said that you kind of hitting the limits on premiumization. So the focus is going to be on, because last many quarters, last 2 years, you've the limits. I said that the focus that we put on now, we have reached a stage, we've got about 75% of our revenues now coming from our elite and premium range. Now looking at it, what we need to relook at the lower priced wines, find a way to pull the levers there on the cost. And push them, right? Good ideas. Yeah. So, but you also said pricing will be a little bit under. Focus on all equally. Yeah, but which means, I mean, there's no dramatic increase in margins. You in that 28-29% kind of range, right? I mean, as you continue to focus on everything else, the lower end of the portfolio as well. We see our margins improving pretty significantly from where they are in Q3. Let me state that here. Okay. In that, you're not guiding to specific numbers, but I think as my colleague said, in that around 28-29% back to those kind of levels. I'm not one to give specific guidance, but I think I've already said what I said. Okay. Improvement in margins. Rajiv, is a buyback something that you would consider? No, we are not in a position to do that right now. That's not on the cards right now. No, we hope to. You're not getting the high return you want because you're not picking the right stock at the right time. It is not about luck. It is about the proven strategies that make all the difference.
tackled only by rate alone, or does it need a mixture of rate and liquidity on February 7th itself? Well, not necessarily Feb 7th itself, because RBI has already been proactive with durable liquidity measures, but clearly liquidity easing is a precondition to ensure policy transmission takes place, because in the last 9 months or so, bank funding costs have gone up. So any rate cuts we deliver now, the full transmission is going to take time. So we need to basically do a lot more in terms of durable liquidity injection. I mean, for Feb 7th itself, we are not expecting any major liquidity announcement given the surprise we've already seen. But I think looking over the next 6 to 9 months, our own estimate is we need to create reserve money of over 4 trillion INR. And this essentially cannot come through one tool alone. So a mix of tools in terms of further VRRs, FX swap, as well as more OMO purchases. Our own estimate is over 2 trillion INR worth of OMO purchases will also be needed in order to create the durable liquidity. So it's going to be a mix of various tools going forward. Okay, so that, and we may not know that on Feb 7th itself, obviously. But, Soumya, the Reserve Bank has been, not just LCR, it has been sounding cautious even in terms of the credit deposit ratios. Do you think you will get a sense that the Reserve Bank will say, okay, credit growth has fallen enough now, it will change its lingo to spur credit growth? Are you expecting anything on those lines, the language? Yeah, thank you, Lata. I think just taking this continues to be an issue, but regarding the larger objective of this credit growth significantly outpacing deposit growth, I think that has significantly corrected in the banking system as of today. As of today, both the credit and the deposit growth are almost running parallelly together. So my sense is that the objective of the Reserve Bank of India calibrating their credit growth through the increase in the regulatory weights may have run its course, and possibly the fear of the deposits, actually deposits are now a little bit higher than the credit growth because of the decline in the credit growth in the last 1 or 2 months. So from that perspective, the central bank may be comfortable or may just indicate that the objective which we wanted to do with the credit growth moderation, that has been achieved, and basically we'll keep a strong vigil. But as of now, I think the objective of this credit growth will be narrowing down has been achieved for the time being. So that will be a part of the discourse of the central bank communication. That will be very big, if they also indicate that we are, as Samiran is asking, that liquidity, we will keep liquidity in surplus and we are satisfied with the credit deposit ratios. That is asking a lot from the central bank. Sajid, are we really that confident of inflation? I mean, after all, the rupee is now at 87, 25, 30. Can we really be sure that the inflation problem dragon is bolted? The core for a very long time, and I think even if you look at the last few months, the momentum has been soft. So one would argue that there is space for core inflation to absorb some important inflation, in the if the rupee weakens. What we're also forgetting is that the rest of the world may suffer from an adverse supply shock because of a trade war, which pushes up prices. But in Asia, there's another disinflationary force, there's a countervailing force, because if the US and China get into a trade war, more and more of the Chinese excess capacity should come to Asian countries, including India, and that should be disinflationary. So I think on core inflation, despite a weaker rupee, I think there are no alarm bells, and with growth, with pricing power not really there in many sectors, much of these input cost inflation can be absorbed in the form of margins. The wild card here is food, and I think one has to bank on the fact that we've had a good Kharif harvest, Rabi sowing is going well, food prices are rolling over. So I think over the next 3 to 6 months, there's some visibility here that inflation is going to be around 4.5%, which should give the RBI some comfort. One final point I'll make, you see, with fiscal policy consolidating, the onus on growth has shifted decisively to monetary policy. If we want rate cuts to be efficacious,
It will not be efficacious in an environment in which banks are borrowing 1 trillion or 2 trillion from the RBI, because if they're doing that, behaviorally, they will not be cutting deposit rates. And they aren't cutting deposit rates, they aren't cutting lending rates. So the RBI will have to inject enough durable liquidity over the next 3 months just to ensure that banks have that comfort and start cutting deposit rates. By our estimates, they've injected almost 2 trillion of durable liquidity in the last few weeks. But despite that, in February, headline liquidity should be in a deficit of over 1 trillion, and in March, over 2 trillion. So more work needs to be done. So I think liquidity is not adding for the sake of adding. You add as much as you need to get the monetary policy transmission of your rate cuts. Okay. Well, actually, Dr. Sen, all your members are actually wanting the Reserve Bank to be much more considerate to growth. What is your sense? How should the Reserve Bank sound? Should they sound like we are here to help growth in every way, or should they be cautious? No, I think they should continue to sound cautious. Not so much. I think the budget has raised no real issues as far as the MPC is concerned, but Mr. Donald Trump has. Yes. And until that plays out, if I were the MPC, I would be very, very cautious. Oh, okay. So the chairman, I think, is going to vote differently. But gentlemen and Sonal, why don't we start with the voting itself? First question is obvious. What will the MPC do to repo rate? Start with you, chairman. Dr. Sen? I think they should hold it as of now. Oh, really? Okay. Samiran? We are calling for a 25 basis point cut in the February policy. Okay. Sonal? 25 basis point cut. Soumya? 25 basis point cut. Sajid? 25 basis point cut. Okay. Chairman, sir, you've been overruled, and how? Why don't we come to the CRR? What should or will the MPC do to the cash reserve ratio? Dr. Sen? I wouldn't fiddle with the CRR. I would operate with other instruments. Wouldn't. Fine. Samiran? No change in CRR. Oh, okay. Now you'll agree with the chairman. Sonal? No change. No change. Soumya? No change for now. For now. Okay, fine. Point taken. Sajid? No change. Okay, so there's a unanimity on this issue, at least for this policy. How many cuts in this calendar year, including the one in February, since some of you have? Dr. Sen, how many cuts? Uncertain. Oh, okay, you're not committing. Sonal, how many cuts, including the one in February that you have voted for? 100 basis point in total. Okay, Samiran? 50 to 75 basis points. All right, Soumya? 75 basis points. Okay, there's wide variety. Sajid? 100 basis points, global conditions permitting. Okay, fine. So actually, the committee is pretty dovish. The Citizens Monetary Policy Committee wants a cut 4:1 in the current policy. They don't want a CRR cut, but in the longer run, there are at least two people who want 4 cuts in 2025. Well, that's a fairly dovish MPC statement we have here. Wrap up on this special. Let's see what comes in the RBI MPC. How about listening to global market maestros before crafting your investment strategy? How about getting deep insights into their businesses from top Indian honchos before putting your money on the line? How about making every trading day profitable with strategies from the market masters, macro pundits, and chart wizards?
Only one show gives you a head start to your trading day. Get ready to profit. Get ready for business with Bajar at these times on CNBC TV 18 and CNBC. What does it take to build India's largest startup platform? It takes a journey of starting out as an unknown and ending up as unforgettable. It takes more than 2 decades of celebrating the most influential and influencing the most celebrated entrepreneurs. From chronicling the stories of India's startup universe to becoming a success story in itself as India's longest running show on startups and entrepreneurship. Celebrating 21 action-packed years of building India's biggest startup community. Young Turks at 21. Only on CNBC TV 18 and CNBCTV18.com. CNBC TV 18's most comprehensive and award-winning news show, India Business Hour, drops first on YouTube. To get the first access to the most influential architects of policies and politics, the key news makers of the day, discover the big themes as we decode the business of markets, macros, and more. Be the first to go to the heart of all the top stories that drive the day's agenda. Catch the award-winning India Business Hour live every night on YouTube with me, Shireen Bhatt. India Business Hour live on YouTube at CNBC TV 18 weeknights at 7 p.m. For the first time in nearly 5 years, the Reserve Bank of India could kick off a rate-cutting cycle, making governors... Versus 20. Hello, welcome to India Business Hour. I'm Parikshit Luthra. Here are the headlines we are tracking this evening. Sensex and Nifty fail to hold early gains. Midcap see sharper cuts. Rupee falls to a new low. $1 is now worth nearly 88 rupees. 70% of market participants polled by CNBC TV 18 expect a 25 basis point rate cut from the RBI tomorrow. 70% also expect rate cuts of at least 75 basis points in this cycle in what will be the new Governor Sanjay Malhotra's first policy. Shares of State Bank of India decline after third quarter margins shrink to a 42-month low. Deposit growth rises by just 2% sequentially, but asset quality improves and slippages drop to a 27-month low. Bharti Airtel's third quarter profits nearly quadruple thanks to exceptional gains from Indus Towers deal. Revenue rises 9%. Average revenues per user jumps to 245 rupees per month. FMCG major ITC reports a mixed bag in quarter three. Profits beat estimates, but revenue and margins fall short. Tata Group's Trent meets estimates with 34% revenue growth. Hero MotoCorp also meets estimates with a 12% jump in profits and 5% growth in revenues. Hexaware all set to return to the Lal Street with a 8,700 crore rupee IPO, the largest by an IT company till date. Private equity player Carlyle will be diluting more than 20% of its stake, taking its shareholding to just over 74%. Uproar in Parliament after the US government releases a video of Indian nationals in handcuffs and chains being deported. External Affairs Minister says India is engaging with the US to ensure deportees are not ill-treated. Also promises to crack down on the agents facilitating illegal migration. The head of United Nations warns against ethnic cleansing after US President Trump proposed to own the Gaza Strip and resettle Palestinians elsewhere. Even US allies like Germany, UK and many countries including Saudi Arabia, Turkey, China and Brazil have rejected Trump's proposal. More than 100 employees at the Samsung plant on the outskirts of Chennai are up in arms once again. Demand the reinstatement of 3 workers who were suspended for alleged connections with the workers' union. Madras High Court has allowed the union to register workers. Aircraft maker Boeing expects India's aviation market to quadruple by 2043, promises to deliver 2,500 aircraft to India over the next 20 years.
Zomato board changes the name of the parent company to Eternal. It will house all the group's businesses, including Zomato and Blinkit. The name of the publicly traded stock will also be renamed Eternal. Let's start with the market action. Sensex and Nifty failed to hold early gains to end the day in the red. Sensex lost over 180 points and is barely clinging on to the 78,000 mark. Nifty lost nearly 100 points. Midcap saw sharper cuts, with the midcap index losing 680 points. Financial stocks managed to buck the downtrend, with the Nifty Bank index ending in the green. In the money market, the rupee hit a new low against the US dollar. The rupee weakened by about 11 paise today. $1 is now almost worth 88 rupees. 10-year bond prices and the yields remain largely flat ahead of the RBI's monetary policy decision tomorrow. 70% of market participants polled by CNBC TV18 expect a 25 basis point rate cut from the RBI tomorrow. 70% also expect the rate cuts of at least 75 basis points in this cycle. 60% are betting on the RBI to announce additional liquidity measures in what will be the new Governor Sanjay Malhotra's first policy. Latha Venkatesh is here with more on what we can expect from Governor Malhotra's first policy. Well, it's one of the most awaited monetary policies, and the rate cut is priced in. The ubiquitous question is, rate cut hai aur kya? That's the question. Will there be a CRR cut? More than a CRR cut, the market is going to watch for whether he says, I will give liquidity as and when required, or whether he says, I will keep the liquidity surplus. So the difference between adequate and ample liquidity will be very much watched. Another question that people will watch is there a rate cut in April? Is he signaling more dovishness? That's not priced in yet. And then about the regulations. You know, the RBI has pulling banks from not growing credit too fast till deposit catches up. They have been unhappy about the credit deposit ratio being high. Do they say, okay, now the credit deposit ratio is fine? That will be much watched. And then, of course, the three big regulations that are expected: the liquidity coverage ratio LCR rules, the ECL, expected credit loss rules, and the higher provisioning for infrastructure projects. Does he postpone all of them in no uncertain terms? That's what people will watch out for. And finally, an expectation, a hope, that the higher risk weight on NBFC loans, it was raised from 100 to 125%. Will that be reduced? These are the things people are waiting for, much more than the rate cut, which is priced in. Well, my own two-bit, the governor is unlikely to say, I will keep liquidity surplus. He has to worry about the rupee. Nor can he easily signal a rate cut in April as well, because then people will short the rupee. It becomes cheaper to short the rupee and go into dollars. He will, of course, clarify on LCR, saying that, you know, this is wartime. You don't bring out structural reforms at a time like this, so you will definitely defer them. But asking for a reduction in risk weights on NBFC loans, which banks give NBFCs, I doubt that will be there. So looks like the market will have something to cheer, but let's see. And shares of State Bank of India declined after third quarter margins shrunk to a 42-month low. Deposit growth rose by just 2% sequentially. However, asset quality improved and slippages dropped to a 27-month low. Abhishek Kothari has the details. Well, SBI's result was weak on the net interest margin front, and that disappointed massively. So overall net interest margin is at 14-quarter low. The domestic net interest margin is at 15-quarter low, while the international net interest margin is at 7-quarter low. What's not worked in the net interest margin is that despite loan growth being healthy, they have not been able to command on the yield side, and that's impacted them. So the deposit growth was only 10% YOY and about 2% sequentially, but their interest outgo or interest expense growth was much higher. So cost to income ratio is at 4-quarter high of 55.1% versus 48.5% in the previous quarter. On the positive side, the credit deposit ratio is at 23-quarter high. The annualized slippage ratio, that is the quarterly annualized slippage ratio, is at 9-quarter low of 0.4% versus 0.5% in the previous quarter. Analysts were working with a higher slippage ratio this time around. So their asset quality is the best in last 10 years or even more. Gross NPA ratio has declined to 2.07% versus 2.13% in the previous quarter. Robust fee income growth. Fee income has grown higher than the overall loan growth also.
So it's grown at 16.4% YY and close to 6.5% sequentially. With reference to the P&L to ARPOL, the NI was 2.7% below ARPOL. However, the profit was higher by 5% to ARPOL. Last time I revised the guidance to 10%. around 10%, and we are almost there. And as far as CASA is concerned, of course, there is a structural shift in terms of deposit liability side of the balance sheet of the banks, and we have to live with that. While we definitely would try to make CASA to remain at 40%. Domestic book, obviously, the cost of deposit, cost of resources being higher impacted that. We held on to the yield and advances. We maintained the yield and advances. And while maintaining the stellar asset quality, I think you must remember that we have not compromised on the asset quality. So I believe the domestic credit growth will continue to be at 14 to 16% range, and the margins will be maintained at 3%. And staying with earnings, telecom giant Bharti Airtel has reported a strong set of numbers in the third quarter. Net profits surged more than 500% on a sequential basis. Airtel also reported an exception gain of more than 7,500 crore rupees during the quarter due to the consolidation of Indus Towers. The company's revenue rose on a quarterly basis. More earnings. FMCG major ITC reports a mixed bag in quarter three. Profits at more than 5,600 crore rupees was just ahead of estimates, but revenue growth of more than 8% was below estimates. Margins also contracted to just over 34% from more than 36% during the same period last year. Auto major Hero MotoCorp has reported a stable set of numbers in the fourth quarter, meeting street estimates across all parameters. Net profit rose more than 12%, while revenue grew 5% on an annual basis. Revenue grew 35%, while net profit surged 34% compared to last year. Margins, which stood at 18%, surpassed expectations. However, volume growth for the quarter was weak. Hexaware Technologies is set to make a comeback to the Dalal Street. The company's IPO will open for subscription on the 12th of February and is looking to raise over 8,700 crore rupees. The IPO will be a pure offer for sale, with promoter Carlyle selling stake. Post the IPO, Carlyle's stake will be down to 74.1% from 95% currently. I don't think the industry is going to pick up in growth materially. 24 was maybe 4.5%. We get a little bit better percentage. So we're talking about high single digits. Can we push to, at least for the industry, low double digits? No, I don't think the industry will get a double digits anytime soon. The big story back home: uproar in Parliament after the US government released a video of Indian nationals in chains and handcuffs being deported back to India after trying to enter US illegally. A video posted online by the US Border Protection Force showed Indians being boarded into military aircraft. The video has music overlaid on it and shows people in chains and handcuffs. The head of the US Border Patrol called it successful deportation of illegal aliens to India. This was the farthest deportation undertaken by using a military plane. Opposition parties protested what they called inhuman treatment of the Indian nationals by the United States. Opposition lawmakers, including Congress leader Rahul Gandhi, protested outside the Parliament building. Some wore handcuffs and carried placards that read, "Humans, not prisoners." External Affairs Minister Jaishankar said India is engaging with the US to ensure deportees are not ill-treated. He also promised to crack down on agents facilitating illegal migration. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन, जैसे हम कोई भी एक्शन लेते हैं, लीगली एक्शन लेते हैं, हमारी सुनवाई होती है, ऐसे कोई सुनवाई नहीं करने दी है, कोई हमारे बयान नहीं हुए, कोई हमने लॉयर वगैरह नहीं हमारा हुआ,
तो उन्होंने हमसे बिना पूछे कि तुम क्यों आए हो, क्यों अपनी कंट्री छोड़ी है, हमसे कुछ नहीं, हम शरण मांगने गए थे, कुछ वैसा नहीं, हम क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने ऐसा ट्रीट किया, हमें एक जंजीरें बांध गए, जैसे हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें, लेडीज बच्चों जो 18 साल से हैं, 18 साल से ऊपर हैं, सबको जंजीरें बांध के। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? We have to reach out to them. We have to tell them what our concerns are, so tell them about why it is creating a serious problem in India at the level of public opinion, and that this can damage the kind of ties that we want to build with the United States and create more distrust and mistrust. When there are people who have gone there simply illegally but have no criminal record, then maybe something can be worked out at the humanitarian level. It is unfortunate is that in the past, when they have deported people after 2012, they were manacled and there were those leg restraints. They did not issue a video out of it. And you can catch our coverage on the deportation of Indian nationals with former Foreign Secretary Shashank and Kamal Sibal on News Center at 9:30 p.m. right here on CNBC TV 18. The government has said most Indian nationals in the Russian armed forces have been discharged. Currently, 18 Indians remain in the Russian forces, out of which 16 have been reported missing by the Russian side. The Foreign Ministry added that Russian authorities concerned have been requested to provide an update on the remaining Indian nationals in their armed forces. They have also been asked to ensure their safety, well-being and early discharge. The cabinet is likely to take up the new income tax bill tomorrow. In her budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced that the bill will be taken up this week. The bill aims to overhaul the existing tax structure to make it more simpler and transparent. More than 100 employees at the Samsung plant on the outskirts of Chennai are up in arms once again, protesting employees' Incred Finance brings your dreams to reality. Whether your dream is to grow your business, renovate your home, or study abroad, Incred can make it happen. Incred Finance. Borrow with confidence. Chennai have surfaced days after 3 employees of the plant were suspended by the company for allegedly engaging in activities deemed detrimental to the interests of the South Korean electronics giant and its operations in India. In fact, we're coming to you just a few meters from the plant itself, where, as you can see, a line of company buses and barricades have been erected so as to ensure that members of the public don't quite see the scale of the sit-in protests occurring just beyond this line of vehicles. But what we have been told is that well over 100 employees have been sitting in on protests demanding that these 3 employees be reinstated after their suspension itself. Now, interestingly enough, employees and members of the Samsung India Workers Union have claimed that the suspension has taken place not on account of disciplinary reasons, but simply because these employees were members of the recently registered Samsung India Workers Union. They've also claimed that Samsung does not quite want any on-ground representation of their employees engaging in any union activities, at least on campus. However, in a statement, Samsung said, and I quote, "The employees in question violated the company policy and have been suspended temporarily and will be subject to appropriate disciplinary action following a formal inquiry," end quote. Remember, this isn't the first time that issues have cropped up between Samsung's management and employees. Back in September, well over 1,100 employees staged a protest outside the plant, demanding for better representation, better pay and privileges that they said every employee deserves, post which Samsung agreed to some, if not many, of these demands. However, what we are picking up from the ground is that a breakdown between Samsung and its employees has now taken place with regard to these demands, and more importantly, with regard to representation by way of the union. These employees allege, while Samsung says this is more on account of a disciplinary issue which will be resolved, or verdict will be passed by a disciplinary committee in a few days from now. And shares of IT stocks perked up in early trade after IT an impressive set of numbers in the fourth quarter. The company
delivered a strong growth outlook for 2025. Revenue hit 5.1. The day beyond Zomato, something became a significant driver of the business, which today, of course, is the quick commerce business Blinkit. But why Eternal? Dipinder says that this is a powerful name and a tall order to live up to. But remember, this is just the change in the name of the corporate entity that hosts its businesses, and the app that you order food on, that will continue to be called Zomato. Back to you. All right, thank you very much, Shilpa, for joining us with that important update. Moving on, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has praised US President Trump's proposal to take over Gaza. He said there was nothing wrong with the idea of displacing Palestinians from Gaza to redevelop the region after the war. Rights groups have condemned the move, stating it as ethnic cleansing. The United Nations has said that the move is strictly prohibited under international law. This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done. But Trump's entry into the White House gives enormous, I say, backing to those who wish to see Iran's aggression rolled back. In the search for solutions, we must not make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. Toward the two-state solution, an end to the occupation and the establishment of an independent Palestinian state with Gaza as an integral part. Moving on, China has accused the United States of making false allegations about its role in the fentanyl trade to justify tariffs on Chinese products. The complaint has been lodged with the World Trade Organization. In the filing, China said the measures were discriminatory and protectionist and violated trade rules. WTO's settlement framework also provides 60 days for dispute consultations, after which China has the right to adjudication by a panel of judges. Protests erupted in the United States ahead of Trump's deadline for 2.3 million federal government workers to forfeit their jobs in exchange for about 8 months of pay. According to US media reports, more than 1% of the workforce has chosen to accept Trump's offer. That's between 20,000 to 40,000 federal workers. The White House has warned of layoffs if not enough employees choose to resign. The United States Secretary of State Marco Rubio has announced that he will skip the G20 summit in South Africa. Rubio has accused the nation of pursuing an anti-America agenda. Rubio's statement comes just 2 days after US President Trump criticized South Africa's land reform measures. He said that the reforms were designed to address the inequalities created during the apartheid era. South Africa will be hosting the event from the 20th to the 21st of February. Argentinian president has said that the country will withdraw from the World Health Organization. The government said that the Argentinian decision is based on profound differences in health management, especially during COVID. WHO has said it was looking into Argentina's announcement. Aircraft maker Boeing expects India's aviation market to quadruple by 2043. Speaking to CNBC TV 18's Abhimanyu Sharma, Boeing India's president Salil Gupte has said that India will receive 2,500 narrow-body aircraft of the 2,800 earmarked for South Asia in the next 20 years. We are now forecasting that for the region, you'll have more than 2,800 airplanes on the civil side coming into the region over the next 20 years. Of those, about 500 aircraft. The vast majority of those will be narrow body, single aisle. Budget carrier Indigo said it will damp lease a Boeing 787-9 Dreamliner wide-body aircraft from North Atlantic Airways. The aircraft will be leased for an initial period of 6 months and can be extended to 18 months. The wide-body aircraft will arrive in the country in the coming weeks and operations are expected to begin next month. The airline said it will explore further opportunities with North Atlantic Airways to contract more aircraft. And before we wrap, most exit polls are pointing to a BJP victory in Delhi Assembly elections. 2 polls were released today. AskStocksAnalysis India is projecting a thumping victory for the BJP with an estimated 45 to 55 seats. Aam Aadmi Party is expected to win 15 to 25 seats. Today's Chanakya is also predicting a big win for the BJP with an estimated 51 seats. AAP is projected to win 19 seats. The out of power in the national capital for 27 years. The election results will be announced this Saturday.
With that, it's a wrap for this edition of India Business Hour. Thank you for watching. News continues right here on CNBC TV 18. That Trump's tariffs are looking rather than actual tariffs. In other words, we've seen tariff announcements for Colombia, for Mexico and Canada, all either reversed or delayed. And the only country where we really do have... That's good. Dalal Street fails to hold on to opening gains. Nifty and Sensex end 0.25% in the red. Broader markets underperform. The mid-cap index falls over 1%. The shares of State Bank of India decline after third quarter margin shrink to a 30-month low. Deposit growth rises by just 2% sequentially, but asset quality improves and slippages drop to a 2-year low. Trent delivers an inline set with moderate expectations in the third quarter. Revenues are higher by 34% on a year-on-year basis, but the stock tumbles 8%. Meanwhile, Swiggy's losses mount on higher investments in quick commerce. But the digital platform business maintained its guidance to achieve EBITDA break-even in food delivery by the third quarter of FY26. Hello and welcome to Markets Forward, your go-to show where we aim to get you all of the key data points and all the day's action. Plus, of course, we gear you up for the next trading day. I'm Surabhi. With me is my colleague Vinny. Hi, Vinny. Hi, Surabhi. And an interesting day today, right? Coming in. Like yesterday also what we saw was range bound. Today also that 23,500, 23,700 is where the Nifty managed to roam at to off the day's low, off the day's high, somewhere in between and managed to close and ending this elongated week for us at least, right? Oh, absolutely. I think profit taking was the order of the day, and that's exactly what transpired ahead of the RBI policy. And maybe you can't fault the bulls for that because the Nifty has been on a winning streak. It's recovered almost 800 points from the lows of 22,000, nearly 800, which is where we were just before the budget. So from those lows, the Nifty has moved higher. In fact, let's get the intraday chart up on screen for you.
The end result was 0.4 lower, slightly off the lowest levels of the day. But yes, the fact is that Nifty couldn't really make a meaningful attempt at the 50-day moving average, which comes in around the 23,772 mark. It was around that market open, drifted down from there and never really kind of recovered. The mid-cap index, like we told you in the headline, was even weaker. So if you look at the advanced decline ratio, it was absolutely neck to neck. I mean, slightly more than one, you can say about 1.5 stocks declining for every one that was advancing. 12 advances, 1,400 declines. So it was a big fight between the bulls and the bears that was playing out today. And, Vinay, if you talk about the sectors as well, barring the bank Nifty, which was relatively better off, it's awaiting that big cue from the RBI tomorrow where the rate cut is expected. Barring this sector, most other parts of the market were weak. Consumer, real estate, PSU stocks, so like a all fall down kind of a market, barring a couple of interesting result reactions, which we'll talk about. Absolutely interesting result reactions. And also, Subi, let's not forget pharma. That was holding out some bit of a... We had some good companies come out with their results yesterday, some carry forward con call highlights. So pharma was some bit of a green. But on the show, we have an exciting lineup for you all. And what we have for you all, we'll start with the top movers and shakers for the day today with Ormas, and then we'll move on to the stocks for the day, which is SBI, Trent, as well as Swiggy. So stay tuned as we tell you why these stocks were in focus in today's trading session. Last but not the least, we'll delve into the key market events to watch out for in tomorrow's trading session. On that note, let's get started with our first segment for the day. And Hormaz is here to tell us which are the top movers and shakers in today's trading session, which are the stocks that were moving today. Hormaz. One key takeaway, if the street wants to reward you, it will reward you disproportionately without stopping. But if it wants to beat you out of shape, it will without any worries. Take a look at this trend, 8.5% lower after its results. It was not an extreme reaction in the first few minutes, but then the stock was just one-way traffic on the downside. SBI 2 ending at the lowest point of the day. Reddington was an earnings reaction as well, ending on the positive side, 6.5% higher on that. And as well as REC, the loan growth being below its guidance, and Kansai Nerolac, another earnings reactions as well. As I spoke of rewarding, before that, because the RBI policy ahead of that, the real estate names were in focus today. Macrotech ending at the lowest point of the day, as did Phoenix Mills and Godrej Properties. Some pressure seen in these real estate names, also Oberoi Realty and Prestige Estates. Almost all the stocks in the real estate index ended lower in today's session. I talk about rewarding stocks after results. Abbott India is one such name. Was up yesterday, up today as well. Solar Industries, after the management cut its guidance, ending 6% lower, and cash even higher today, 8.5% higher on that stock as well. And some of the other poor commentary reactions being from Page Industries and of course from Swiggy. We'll talk more on that as the show goes by. And lastly, on the volumes front, GSK Pharma, the top volume-led gainer today, 14.5% higher. Also ably supported by stocks like KNR Constructions and Eris Life, which gained anywhere between 3 to 5%, and also some other names that contributed to the volume front. Back to you guys. Okay, absolutely, Ormas. Thanks very much. Yes, indeed. Very, very striking result reactions and, stock moves playing out in the market today. Thank you for that. Well, let's quickly welcome in our guests. We have Amrish Baliga joining in on the fundamentals, and also Ruchit Jain, Vice President of Equities at, Motilal Oswal. He looks at, of course, technicals. Thanks very much for being with us, gentlemen. Ruchit, let me ask you first, because levels are important. The market giving off a little bit of what's been a good rally last 7-8 sessions. We've, managed to climb back almost 800 points. What is the next level for the Nifty to keep in mind on the downside? Yeah, hi, very good afternoon, Surbi. Well, definitely a lot of factors have changed, which has led to this pullback move. Firstly, we have seen that, US dollar index has seen some cool off from the highs of 110. Also, the 10-year bond yield has cooled off from the highs, and these two are the main factors since the month of October, which were worrying our markets. Now, from the lows of 22,800, where the momentum readings were oversold, we have seen a pullback move, and especially, the FIs have started trimming some of the index futures, at least short positions. Day before yesterday, we had around 10% long short ratio, which has now improved to 18% as on yesterday. So we believe that on the higher side, 23,900, 24,000 would be the next resistance where the 100 MI is coming in. So that level could be tested once, before we go into the a broad consolidation phase. And on the lower side, 23,300 is the immediate support to watch out for. So we expect another leg of a move from current levels towards 23,900 to 24,000. And then probably maybe we should see a phase of consolidation in the markets. Okay.
So keep an eye on this level. Maybe probably after that level, we'll see some bit of a consolidation. But let's move on and actually talk about the State Bank of India, which also reported their Q3 numbers. We are seeing a decline that came in the stock today. Margins saw some bit of a decline and shrinkage, and that was at a 30-month low. Abhishek Katari is joining with us to give us details on the SBI. What did they miss on what was it that they were managing to do well? मैंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की थी, काफ़ी लॉस हो गया। तब मैंने ECG ट्रेड सॉफ्टवेयर क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग दिन, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हम लोअर लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों प्रेशर में, लेकिन एक डे लो पर थोड़ा सा सपोर्ट आने की यहाँ पर कोशिश, दोनों नीचे एक ये कह सकते हैं कि रेंज में, बेसिकली एक रेंज में है निफ्टी, और खासतौर से बैंक निफ्टी रेंज में है। इसको थोड़ा सा आई थिंक लिखने में थोड़ा शायद गलत हो गया ये, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ काफ़ी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर दोनों इस समय एक सपोर्ट रेंज के आसपास काम करते हुए, और ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी है तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है यहाँ पर। कल की आरबीआई की पॉलिसी अब एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी मार्केट के लिए, और आज ऑब्वियसली अभी कुछ ही देर में एसबीआई के नंबर्स आने चाहिए, इंतजार कर रहे हैं एसबीआई के नंबर्स का, इनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर शायद रहने वाला है। लेकिन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं शो में। और श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल 1.5 घंटे बाजार पे क्लोजली नजर रहेगी, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप, जैसा कि आपने जिक्र किया, फिलहाल कैसे लग रहे हैं सर ये टेक्सचर आपको बाजार के? कौन से लेवल्स अब आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? श्रेया, मेरा व्यू अभी भी यही है कि मार्केट में स्टॉप लॉस ही आपको बाहर निकालेगा। आज सुबह हमने बात की थी कि 23,550 पर अपने स्टॉप लॉस को ले आइए। आज का लो 23,562 है, और कंक्लूसिव बेसिस पर कन्विंसिंगली अगर 23,550 ब्रेक हुआ तो आप अपने लॉन्ग पोजीशन में बुक करिए। आप इस मार्केट में अब हम 22,800 22,900 से लॉन्ग पे व्यू लिया था, 23,300 पर उस व्यू को रीअफर्म किया था, तो कहीं पर भी अगर आपने लॉन्ग दिया होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। 23,550 अगर लगे आपको कि ब्रीच हो रहा है तो बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपने ठीक ठाक पैसा बना लिया होगा। 23,650 अगर आपने रीगेन किया, जो मेरा व्यू है कि हम शायद करेंगे, 23,650 आपने रीगेन किया तो फिर तेजी बढ़ेगी मार्केट में, और फिर आप प्रीवियस हाइज की तरफ, इस स्विंग के प्रीवियस हाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपायरी का इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, और थोड़ा सा हम गिरे जरूर है, लेकिन 23,550 बच रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मेरा एक मानना ये भी है कि अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग कर रहे हैं तो वो वाया बैंक निफ्टी करें, क्योंकि वो एक तो निफ्टी से गिरावट कम है, वहाँ पर एक शेड बेटर इंडेक्स है यहाँ पर, और जब तक 50,000 टिका हुआ है बैंक निफ्टी पर तब तक टेक्सचर मजबूत है बैंक निफ्टी का। आज भी लो 150 है, और हैरानी नहीं होगी मुझे अगर कल एक बार हम वापस पॉलिसी से पहले एक अच्छा मूव दिखाएं बैंक निफ्टी पर, और अगर 50,500 के ऊपर अगर आपने निकलना शुरू किया वापस, जो आज का हाई भी था जहां हम खुले थे, अगर आपने उसको निकालना शुरू किया श्रेया, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, ऑल्सो बिकॉज बैंक निफ्टी में एक फैक्टर पॉलिसी का रहने वाला है क्लियरली, इसलिए। सर आरबीआई पॉलिसी का जिक्र किया आपने, बैंक किंग में एक फैक्टर रहने वाला है, कैसे देख पॉलिसी को कल जब आएंगे, मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है सर? देखिए, मार्केट एक डविश पॉलिसी लेके चल रहा है।
अब डविश पॉलिसी से मतलब है कि लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, रेट कट आएगा या नहीं आएगा इस पे अभी भी थोड़ा सा डिबेट है। आई थिंक अगर रेट कट हुआ तो मुझे लग रहा है कि वो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम में रेट कट आने हैं, 2025 के लिए रेट कट एक बड़ी थीम होने वाली है और ये मान के चल रहा है कि अब सवाल ये नहीं कि रेट कट कब होगा, रेट कट कितने होंगे 2025 में, ये बड़ी थीम होगी। कुछ पॉकेट्स पर नजर रखें श्रेया, बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी बात की है। इसके अलावा आप नजर रखिए फाइनेंस स्टॉक्स पर, एनबीएफसी स्टॉक्स पर, इन पर नजर रखिए खास तौर से। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज हैं, एक मूव आ चुका है इनमें, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, इन सब में एक मूव आ चुका है। लेकिन अगर रेट कट आया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मुझे लग रहा है एक और मूव आने की यहाँ पर गुंजाइश होगी। आई थिंक रियल एस्टेट एक और स्पेस होगी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाई से हम अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, एज एन इंडेक्स करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा। आई थिंक पीएसयू बैंक्स एक और स्पेस होगी जहाँ पर करेक्शन काफ़ी हो चुकी है, तो वहाँ पर भी आप चाहें मतलब पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन, ये मेरा व्यू होगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक सवाल मेरा मिड कैप्स को लेकर भी है। जिस तरीके से आज सेशन में बिकवाली देखने को मिली मिड कैप में, इनफैक्ट आप देखिएगा तो 1.5% करीब पूरा इंडेक्स लुढ़कता हुआ। कल सर आपने कहा था कि मिड कैप में अगर फंसे हैं तो वहाँ से निकल जाने की सलाह होगी, और देखिए आज जो हालात, क्या अब क्या करें मिड कैप में? देखिए मैं जैसे आपको कल भी ये बात कह रहा था, जस्ट बिकॉज रैली है, जस्ट बिकॉज डिक्लाइन है, मेरा व्यू नहीं चेंज होगा। मेरा व्यू कल भी वही था चाहे मिड कैप में रैली थी, मेरा व्यू आज भी यही है चाहे मिड कैप में गिरावट है, कि इस रैली में फंसी हुई पोजीशन से, मिड कैप से आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें तो वो मेरे ख्याल से एक आपके लिए बेहतर होगा। अरे एक और चीज़, मैं इसमें सिर्फ मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ट्रेंड का स्टॉक देखिए, अब आप आज ट्रेंड का चार्ट देखिए इंट्राडे में। अब ट्रेंड के नंबर्स में आप कहने को कह सकते हैं कि चलिए थोड़ी सी मिस हुई एस्टिमेट से, लेकिन अगेन इस स्टॉक ने अब पॉजिटिव रिएक्शन देना बंद कर दिया। लेकिन पिछली बार जितना गिरा था उतना नहीं गिरा, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था ये। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? मेरे ख्याल से दिक्कत वहाँ पर आ रही है जहाँ पर मार्केट का बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। अब आज सुबह से हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं स्विगी का। आज अब देखिए स्विगी का इंटरडे चार्ट देखिए, जहाँ पर भी आप बिल्कुल कंप्लीटली ट्रस्ट फैक्टर लूज करेंगे, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि और दिक्कतें बढ़ेंगी। और मुझे हैरानी नहीं, आज आज सुबह जो वो रिकवरी आ रही थी तभी मैं यही कहा था कि नहीं टिकेगी नहीं है रिकवरी, और ये जाएगा स्टॉक। अब 390 का जो इसका आज इसने 52 वीक लो लगाया, और मेरा जो एक व्यू था कि यहाँ से और 25-30% ये स्टॉक गिरेगा, वो इंटैक्ट है। तो ऐसे आपको कई स्टॉक मिल जाएंगे जो 30-40% ऑलरेडी गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से भी 30-40% गिरने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि उनमें अर्निंग्स नहीं है। जहाँ पर भरोसा आपका कम होगा वहाँ पे दिक्कत बढ़ेगी। और ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसे वैसे कई एग्जांपल है। तो मिड कैप में मेरा व्यू अभी भी यही है, और स्मॉल कैप में कि थोड़ा सा आप केयरफुल होकर और कॉन्शियस होकर ही ट्रेड करें। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वोडाफोन आइडिया का 2% आज भी नीचे है मार्केट में। तो ऐसे कई स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहां पर अगर आप फंसी हुई पोजीशन में तो रैली में से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल अपनी। Tired of being a slave to your trading screen? Are you drowning in losses because of manual trading? What if you could make more money than 90% of all manual traders? With automated AI powered trading, you can. It's time to trade smarter, not harder. Hey there, I'm Hardik Raja and I've helped over 2000 traders create consistent profits with my AI powered trading system. Before you say I don't know coding or I'm not tech savvy enough, let me stop you right there. You don't need any coding skills, advanced Mac, or even trading experience. I will personally guide you through the entire process of setting up your own AI trading system and help you potentially earn profits that could exceed your current income. In just 3 hours, you will learn how to harness the power of AI tools for market analysis, automate your trading strategies, and aim for returns up to 30% or more. Join my AI-powered trading masterclass and kickstart your journey to earning up to 3 lakh rupees every single month with automated AI-driven trading.
So what are you waiting for? Click on the link below and join the masterclass right now, and I will see you inside. अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर की आशंका हो या इकोनॉमी में धीमेपन की आहट, भारतीय बाजार एक के बाद एक संकट झेल रहे थे। एफआईएस का मूड खराब था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इकोनॉमी का मूड सुधारने की कोशिश की है। अब बाजार में एफआईएस के लौटने का इंतजार है। निवेशक इस बाजार को कैसे समझें और बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले किन चीजों पर ध्यान दें जिससे उनका निवेश फायदेमंद रहे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईडलवाइज के प्रेसिडेंट अजय शर्मा। अजय जी अपनी खास इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी G2G यानी गुड टू ग्रेट के लिए जाने जाते हैं। इनके पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। ज्यादातर सिंगापुर में रहने वाले अजय जी कैलिब्रियम कैपिटल, GH विटनी, CLSA और मॉर्गन स्टैनली जैसी संस्थाओं के साथ भी काम कर चुके हैं। बतौर एंटरप्रेन्योर अजय जी फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और mangotown.in के फाउंडर रहे हैं। mangotown.in इनके दिल के काफी करीब है क्योंकि एक खास जरूरत वाले बच्चों से जुड़ी हुई एक संस्था है। आज हम उनसे इक्विटी इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे। अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइए कि बनारस से लेकर सिंगापुर तक का आपका सफर रहा कैसे? जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर टाइम आप सिंगापुर में बिताते हैं और बीच बीच में भारत आते हैं, तो इस सफर के बारे में बताइए। अनुज जी, कलकत्ते में पला बड़ा हूँ तो प्यार और परिवार तो कलकत्ते में ही है। बनारस में ज्ञान मिला, एजुकेशन मिली, और सिंगापुर में वो सारी चीज़ें देखने को मिली। कई बार मैं कहता हूँ ना, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। भारत को मैंने भारत के बाहर रह के बहुत बेटर जाना है, बहुत बेटर समझा है। अब कोशिश ये है कि बनारस को सिंगापुर कैसे लेके जाऊँ, कि मेरी बच्चियों को मैं वो कल्चर कैसे दूँ, और सिंगापुर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बनारस या अपने भारत में कैसे लेके आऊँ, कि इंडिया के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा है। सफर बहुत मजेदार रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपने बात छेड़ी है कि जो इंडिया की प्रॉब्लम्स उन्हें कैसे दूर करूं, कुछ कोशिश की गई है बजट में दूर करने की। पहले उसी से बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे टॉप ऑफ द माइंड वही टॉपिक रहा है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो की पॉइंट्स रहे हैं इस बजट से वो क्या रहे? देखिए, मेरे लिए अगर आप इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं इकोनॉमी की गाड़ी के, कंजम्पशन, सरकार, गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। पिछले 2-3 साल से अगर हम अपने पोर्टफोलियो में देखें, कंजम्पशन कंपनियां आप देख रहे थे कि रेवेन्यू भी नहीं आ रही थी, प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रही थी। सो 2 चीज़ सरकार ने वाकई बहुत अच्छी करी है। पहला है टैक्स ब्रेक। टैक्स कमाल की चीज़ है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टेक्निकली स्टिमुलस है इकोनॉमी को, जो मिडिल क्लास को वाकई ज़रूरत थी। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प कंजम्पशन। वाकई अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी है, इसकी जो किसान का क्रेडिट कार्ड होता था उस पर 3 लाख की लिमिट थी, 4% में के ब्याज में आपको पैसे मिलते थे, वो भी सरकार ने 5 लाख किया है। ठीक है, सो ये 2 स्टिमुलस मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन का जो पहिया कमज़ोर हो रहा था वहाँ हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा होने वाला है अगले 24 महीने में। कुछ चीज़ें जहाँ हमें लग रहा है कि थोड़ी और बेहतरी की ज़रूरत है, वो है प्राइवेट कैपेक्स के लिए और क्रेडिट ग्रोथ के लिए। अगर हमारी इकोनॉमी 5 से 6% रियल जीडीपी ग्रो करती है और 5 से 6% हमारा अगर इन्फ्लेशन है, तो 12% लेट्स से हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। क्रेडिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10.4 था, नॉमिनल जीडीपी से कम। भारत की इकोनॉमी के लिए कम है। वी नीड एटलीस्ट कि अगर जीडीपी 12 है तो 1.5 टाइम्स हमारा क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए। सो वहाँ थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है अगले 18-24 महीने में उसकी भी ज़रूरत है, तो प्राइवेट केपेक्स भी टेक ऑफ करेगा। क्या आरबीआई उसमें हेल्प कर सकता है? आप जो पॉलिसी एग्जैक्टली यहाँ पर आरबीआई की ही ज़रूरत है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में ये चीज़ नहीं कर सकती, यहाँ आरबीआई को अपनी पहल करनी पड़ेगी कि अब आप क्रेडिट बढ़ाइए। कुछ तो उन्होंने हिंट दिए भी हैं मंडे को, जो उन्होंने किया था लिक्विडिटी वाले मेजर्स। देखिए, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। इन शॉर्ट, एज एन एफआईआई क्रेडिट ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है भारत को। अब देखिए, अगर कंजम्पशन का इंजन चलना शुरू हो जाता है, तो आज मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे दिख रहा है कंजम्पशन मेरा बढ़ने वाला है, यहाँ पर स्टिमुलस आया है, तो मैं नए कारखाने लगाऊंगा। कारखाने लगाने के लिए भी बैंक से लोन चाहिए,
सो एवरीथिंग देन वो एक अच्छी सी वर्चुअस साइकिल शुरू हो सकती है। तो विशेष साइकिल से वर्चुअस साइकिल में बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो इस बाजार की एक पेन तो एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ रही है, क्योंकि उसके बाद बाकी सब तो सिम्टम्स हैं। बिल्कुल। तो एफआईएस सेलिंग जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड एफआईएस सेलिंग देखी है, काफी हद तक हमने उसको पचाया, लेकिन उसके बाद पिछले 3 महीने में तो रिटेल ने भी ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिया कि नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं हम कहाँ ऑब्जर्व से कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल। तो क्या थोड़ा सा भरोसा लौटेगा एफआईएस का? देखिए, एफआईआई को आपको लंबे समय में उन्होंने क्या किया वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप चार्ट दिखाएं, मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं जैसे मैं बहुत सारे हम मित्र हैं, एफआई पैसे मैनेज करते हैं, हमारे जो बाहर के फंड है वो यूएस एंडाउमेंट फाउंडेशंस हैं। तो सबसे पहला ये चार्ट है, ये है निफ्टी का 20 साल का रिटर्न 31 जनवरी 2005 से 31 जनवरी 2025, 20 साल। निफ्टी ने 14.5% रिटर्न दिया है रूपी में, ठीक है। लेकिन अगर आप अगला ग्राफिक देखें, ये निफ्टी का है, नॉट ये निफ्टी, मैं सिर्फ इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूं। डिविडेंड को अगर वो कर दिस ले इज तो टोटल रिटर्न। ओके, ठीक है। ब्लूमबर्ग का ये जो चार्ट है ये टोटल रिटर्न चार्ट है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब आप इसका अगला चार्ट देखेंगे तो वो हमारे रुपए का चार्ट है। जब मैंने अपना करियर किया था रुपया 40 रुपए का, बिल्कुल, आज 87 रुपए का है, तो रुपया हो गया है आधा। अब अगला चार्ट देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एफआईआई परेशान क्यों है और क्यों बेच रहा है। ये कंपैरिजन है निफ्टी और एसएनपी का, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और हमारा बाजार लास्ट 20 साल डॉलर रिटर्न। क्योंकि जो एफआई पैसा डाल रहा है ना डॉलर में डाल रहा है, डॉलर में लेके जाएगा। एसएनपी की है जी, अब लाल वाली लाइन एसएनपी की है, सफेद लाइन निफ्टी की है। रिटर्न है, निफ्टी ने किया है 10.74, हमने किया है 10 और एसएनपी ने किया है 10.63। आप अगर अमेरिका में बैठे हैं, आपके लिए भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। आपसे मैं अगर कहूं कि यार चलो आप यार नाइजीरिया में पैसे डाल दो, आप मुझे क्या कहेंगे? एटलीस्ट डबल रिटर्न मिलेगा तब तो मैं डबल नहीं तो 5-6 पॉइंट तो ज्यादा दो मुझे, करेक्ट। अगर बराबर है वो क्यों रिस्क ले? 20 साल, करेक्ट। ये निफ्टी के लेवल पे है। अब आप कहेंगे कि यार नहीं इतना ठीक है, वहां पर आप साइज में जितना खरीदना है खरीद सकते हैं, जितना बेचना है बेच सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। पहली दिक्कत ये है, अब लिक्विडिटी एंड सेम रिटर्न है। अब हमने दूसरी जो चीज करी है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है, करेक्ट। बिल्कुल, मैं भारतीय जब अमेरिका का शेयर खरीदता हूं ना, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। एफआई अब जब इंडिया का शेयर खरीदता है उसको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है। तो अगर मुझे एसएनपी का 10% बनाना है तो मुझे अब इंडिया में बराबर बनाने के लिए 12 बनाना पड़ेगा, टैक्स के बाद 10 होता है। पहली दिक्कत, तो एफआई वो सोचता है। दूसरी चीज एफआई सोचता है कि करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होगी 4%, तो करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए मुझे अब 16% तक चाहिए। अब चूंकि आप ही ने कहा कि आपको भी मैं कहूँ अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रीमियम चाहिए, एफआई को कम से कम 4 पॉइंट प्रीमियम चाहिए। एग्रीगेट बाजार के लेवल पे आज के दिन एफआई को आप अगर रुपए में 20 से 22% नहीं, एसएनपी में वो ज्यादा पैसे बनाएगा। सो जितने बड़े फंड्स हैं, एंडाउमेंट हैं, फाउंडेशंस हैं, वो हैं, उनको यही दिक्कत हो रही है। इतनी मेहनत करूं, हवाई जहाज लेके भारत आऊं, रिसर्च करूं, आप कितने पैसे बना के दे रहे हैं मुझे? तो नियर टर्म में ये पेन रहने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, अगर बाजार करेक्ट होता है या कुछ शेयर जो ग्रेड हो गए हैं, गुड हो जाते हैं, तो एफआई सबसे पहले खरीदने आएगा, राइट। आप, मैं सच कह रहा हूं, उन्हें आप न तो बेवकूफ समझे न ओवर स्मार्ट समझे। वो 30-35 साल से यही कर रहे हैं। हमें भी चीजें सस्ती मिलेगी, हम भी खरीदेंगे। सबका इवेंचुअली वही ग्रीड एंड फेयर है, मतलब बिल्कुल हमारे लिए वो एफआईएस हैं, वो है तो वो भी इंसान ही। इंसान इन्वेस्टर, उनका भी दिल है, उनका भी मस्तिष्क है। और मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, बहुत रोचक चार्ट प्यारा है। हाँ, जैसे अब लोग कह रहे हैं यार चाइना में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये एक कंपनी है चाइना की, पिछले 5 साल में हांगकांग का इंडेक्स नहीं, एक बुरी तरह गिरा है। आप देखिए अनुज जी, ऑलमोस्ट 10% डाउन है। मंदी के बाजार में ये शेयर 32% कंपाउंड किया है, 32%। अब ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। लग्जरी घड़ियां बेचती है, प्रोमोटर 70% ओन करता है, 100% डिविडेंड दे देता है। जब मैंने खरीदा था 18% डिविडेंड यील्ड थी, वाओ। अभी भी 14.5% डिविडेंड यील्ड है। महंगी घड़ियां बेचता है, हर साल घड़ियों के दाम बढ़ते हैं, 10 से 12% टॉप लाइन बढ़ती है, तो आपको बॉन्ड से बेटर मिल रहा है इन एन इक्विटी। उसी कंपनी
इसका नाम है ओरिएंटल वॉच 398 हांगकांग, इसका टिकर है, खरीद लीजिए। मैं बाहर देखिए, मैं इंडियन शेयर के रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता, लेकिन बाहर का मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज मैं कई अपने मित्रों को कहता हूँ कि एलआरएस से कुछ तो बाहर खरीदो। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फिलीपींस का एलएनटी देखें, लार्सन एंड टूब्रो हमारी कंपनी है, फिलीपींस का लार्सन एंड टूब्रो 5 पी मल्टीपल, 13% डिविडेंड यील्ड, 15% हर साल ग्रो करता है और 2.5% मैनेजमेंट ने बायबैक किया। ऐसी ग्रोथ विद वैल्यू आपको दुनिया में आज मिल रही है, इसलिए थोड़ी बिकवाली होके वहां लोग खरीदने भी होंगे ऐसे मौके, वैसा तो नहीं है। बिल्कुल हैं, आएंगे। बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में जाली, हमें लग रहा है कि थोड़ी बिकवाली में कुछ गुड आए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं इसकी। चलिए एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत बनारस से की थी, माँ विष्णु मंदिर जी। इसकी बात करते हैं कि इसको आपने कैसे, आप स्पिरिचुअल है वैसे काफ़ी, ओके, तो थोड़ा सा इसमें आपने मार्केट में इसको वो इंटरवेंशन की कोशिश की। पूछा ना, बनारस से सिंगापुर, सब लोग टिपिकली बफेट मंगर उन्हीं की बात करते हैं, हमने भी उनका अध्ययन किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हमारी संस्कृति में है, जैसे हमारे, मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक प्रोफेसर थे IIM अहमदाबाद में, डॉक्टर त्रिलोचन साहब, उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब रखी है, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। वो किताब आप पढ़ेंगे तो एक टीचर होती है ना, अनुमान एनालिसिस करना, एक और एक होता है शब्द कि फलाने ने, वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसने कह दिया तो अच्छा ही हो। हम यही करते हैं बाजारों में, तुम्हें वहां में इन्वेस्ट नहीं करते। ब्रह्मा इज वेंचर कैपिटल, कि नई आइडिया, नया सृजन जिसमें कुछ चीजें चलेंगी, कुछ चीजें नहीं चलेंगी। विष्णु इज ग्रोथ फेज, कि एक प्रोडक्ट मार्केट आपका एस्टैब्लिश हो गया है। जैसे इंडिया आज के दिन विष्णु फेज में, हमारा पर कैपिटा 2,500-3 हज़ार है, अमेरिका से 20-25 हज़ार है। स्ट्रक्चरली हम वहां हैं, हर चीज अल्टीमेटली महेश आता है। क्या 2024 भी वैसे ही निकल गया जैसे पिछला साल गया था? प्रमोशन के लिए ट्राई किया पर सफलता नहीं मिली, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे, ऊपर से हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते चले गए। लेकिन चिंता मत कीजिए, 2025 हो सकता है, क्योंकि इस बार न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हैं। आखिर कब तक आप अपने रियल पोटेंशियल से कम अचीव करते रहें, लाइफ में क्लैरिटी की कमी फील करते रहेंगे, हर बार सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाय, आई एम अरविंद सूद और पिछले 25 साल में मैंने 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग दी है और 5,000 से भी ज़्यादा टीवी शोज के थ्रू इस पावरफुल साइंस को मैंने लोगों के घर घर तक पहुंचाया। आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं अपने 2 डेज के लाइव वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के क्षेत्रों को समझना, लकी नंबर्स एंड लकी कलर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वास्तु के माध्यम से घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना, साथ ही सिंपल एंड वेरी अफोर्डेबल रेमेडीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी 2025 की शुरुआत करें पावरफुल विद्या के साथ। रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी आप क्लिक करें। सो सी यू इनसाइड द वर्कशॉप। Every business goes through this business cycle. वेस्टर्न में हम इसको एस कर्व बोलते हैं। हम ग्रीन फेज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको मैं विष्णु फेज बोलता हूं। अब सेम इंडस्ट्री में आप देखिए, मोटरसाइकिल फॉर एग्जांपल, ग्रीन फेज में क्यों, येलो में क्यों नहीं, ताकि नहीं, मैं पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर। ओके, ठीक है। सी ब्रह्मा इज रिस्क, कि आपने 100 चीजों में पैसा डाला, 5 चीजें बड़ी होंगी, 95 खत्म हो जाएगी। जो प्राइवेट एक्विटी वेंचर कैपिटल, वो मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में करता हूं, पर्सनल बैलेंस शीट में। ठीक है, पब्लिक मार्केट में हम विष्णु में खेलते हैं। अब लेट्स टेक, क्या चीज आज के दिन नई है इंडिया में? फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार, पहले वही स्लाइड रखते हैं, पुरानी स्लाइड, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल, इलेक्ट्रिक कार, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। 100 सीसी मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा की स्प्लेंडर होती थी, उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है, साबुन का पेनिट्रेशन बहुत हाई है, तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच गई है, राइट। सो अगर नई इन्वेस्टिंग करनी है, नई इंडस्ट्री ढूंढो। डिसरप्शन जो हो रहा है आज के दिन, वो यहाँ हो रहा है, फूड डिलीवरी, यस, एब्सोल्युटली बुल्सआई। तो अब आप अगली स्लाइड देखिए कि वेयर इज द डिसरप्शन हैपनिंग इन इंडिया। पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं।
सबसे बड़ा डिसरप्शन आज के दिन जो इस कर्व में अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, जनरल ट्रेड जो होता था, जो किराने की दुकान, वो फुल्ली पेनिट्रेटेड है। मॉडर्न ट्रेड स्टिल ग्रोथ में है, ई कॉमर्स वेरी हाई ग्रोथ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अभी क्या हो रहा है, क्विक कॉमर्स। करेक्ट करेक्ट। अब क्विक कॉमर्स की आप एक चीज समझिए, लेट अस अज्यूम आप साबुन की कंपनी है, या आप तौलिया बनाते हैं, या आप ग्लास बनाते हैं। क्विक कॉमर्स में आपको इतना सा रियल एस्टेट है, आपके फोन की साइज, आप 50 ब्रांड प्रोडक्ट नहीं रख सकते। करेक्ट। आप सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट ही दिखा सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो एक बड़ी कंपनी से हमारी बात हो रही थी, तो उनके सीईओ ने पूछा कि अजय, क्विक कॉमर्स में कैसे यूटिलाइज करूं। मैंने कहा आप इन सारे क्विक कॉमर्स, चाहे जेप्टो हो, चाहे जो भी हो, उनके पास जाइए, बोलिए मेरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है अगले 3 साल तक मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट। सो तरीका है कि पुराने प्रोडक्ट को अगर आप नए ढंग से बेचेंगे तो आप नया डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी यू हैव टू कैप्चर व्हाट इज इन ब्रह्मा एंड अर्ली विष्णु फेज। सो दैट इज द फिलॉसफी। और महेश फेज में फिर एग्जिट कर जाएंगे। देखिए महेश में क्या होता है कि दो तरह से, अब ये जो G2G फिलॉसफी है, इसमें 2 चीजें होती है। कंपनी गुड से ग्रेट जाती है, जहां आपकी अर्निंग्स बहुत बढ़ती है, आपका वैल्यूएशन भी गुड से ग्रेट जाता है। एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं, जब मैंने करियर शुरू किया था, एशियन पेंट का मल्टीपल 15 से 20 टाइम होता था, पीक में 80 टाइम चला गया था, राइट। अब 80 अगर 80-100 मल्टीपल हो गया है और आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा कैप्चर हो गया है, तो आप टिपिकली मैच्योर कंपनी हो गए हैं। हम आमतौर पे ऐसे समय में निकल जाते हैं। जो फेज में ग्रेट से गुड बोलता हूं, इसलिए G2G में G1 है गुड से ग्रेट जाना, 2 है ग्रेट से गुड जाना। सबसे ज्यादा पैसा हम खोते हैं जब चीजें ग्रेट से गुड जाती है, बहुत दर्द होता है। चलिए तो इस पर भी बात कर लेते हैं, इस गुड टू ग्रेट, इसके भी कुछ एक आध एग्जांपल के साथ बात करते हैं। देखिए तो अभी जो बाजार गिरा है, अगर आप अगर लाल बिंदु देखें, बहुत सारी चीजें ग्रेट हो गई थी, चीजें महंगी हो गई थी। ये जो मेहम आया है बाजार में, जो बिकवाली, मतलब ग्रेट बिजनेस और ग्रेट वैल्यूएशन। यस, जो ऊपर लाल बिंदु है वो है ग्रेट बिजनेस ग्रेट वैल्यूएशन। ओके। हरे बिंदु है गुड बिजनेस गुड वैल्यूएशन। ओके। और ये जो ब्लू लाइन है, ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके नीचे की कंपनियां मेरे लायक खरीदने लायक हैं। लाल बिंदु वाली टिपिकली हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में कोशिश करते हैं शॉर्ट करें, उनसे दूर रहें। तो ग्रेट वैल्यूएशन आपका मतलब है कि बहुत महंगी हो गई है। देखिए तो वैल्यूएशन, देखिए इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। हम क्या करते हैं, 4 भाग में बांटते हैं कंपनियों को। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, जिसको मैं बोलता हूं पिकासो या वैन गॉग मल्टीपल। आप ना चाहें, हम टिपिकली 50 मल्टीपल के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में कोशिश करते हैं चीजें न रखें जब तक आपका ग्रोथ भी 50। क्या छोटे फायदा भी हो जाता है? 5-6 नहीं, 9.5%। 9.5%? ये बैंक तुझे कहां से मनी पे एफडी कराए और पाए 9.5% तक इंटरेस्ट। डाउनलोड द स्टेबल मनी ऐप नाउ। ग्रॉसली ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ग्रॉसली अंडर वैल्यूड, 4 भाग में बांटते हैं। उसी से हमारा ये जो वैल्यूएशन वाली चीजें आ जाती है। कंपनी का लेवल है कि कितनी बड़ी हो गई है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल है, लीडर है कि नहीं, ये आमतौर पे स्टैंडर्ड है, इसमें भी कुछ नया नहीं करना। वैल्यूएशन में हम बहुत अलग काम करते हैं। तो इसमें आप ये पहली ये गिरावट से पहले की लाइन है या फिर? हाँ, तो गिरावट से पहले के बिंदु ये वाले हैं। गिरावट के बाद मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा। अगर आप एक और स्लाइड करें, ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया कुछ बिंदु आए। तो मेरा काम यही है, हमारी टीम यही दिन भर यही करती है, ये जो 5000 बिंदु हैं, ये कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं। बट ये कंपनी अभी भी ग्रेट है या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल, आपने एशियन पेंट्स की बात की। अब बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब एशियन पेंट्स एज अ बिजनेस ग्रेट है या नहीं है? वैल्यूएशन तो दूसरी बात। चलिए, तो देखिए 2 साल पहले फरवरी 2023 में बिरला जी ने अनाउंस किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपए डालने वाले। बड़ी जो कंपटीशन आई थी, हाँ, उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था। तब मार्केट की थिंकिंग क्या थी कि आज तक पेंट्स को कोई नहीं हिला पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। हमारी थीसिस, इसका मैंने चर्चा की हुई थी आपके 2 साल पहले एक वीडियो में। हमारी थीसिस बहुत सिंपल थी। 20,000 करोड़ की फैक्ट्रियां लगी हुई है पेंट में बिफोर बिरला जी एंट्री। 20,000 करोड़ की स्ट्रक्चर देखिए, 11,000 करोड़ एशियन पेंट का, ठीक है। अगर बड़ी झील है, एशियन पेंट एक व्हेल मछली थी, बर्जर पेंट एक, समझ लीजिए आप, शार्क थी, एक्सो नोबेल एंड सो ऑन,
3-4 डॉल्फिन 30 साल तक कोऑपरेटिव ऑलिगोपोली एजेंट पेंट जो करते थे 24 घंटे बाद पहली बार हुआ है एक बड़ी कंपनी आती है सीधा 10,000 करोड़ लगाती है 6 फैक्ट्रियां लगाती है 155 डिपो लगाती है सप्लाई आपने 50 डिमांड आपकी 10 से 12% ही बढ़ने वाली है करेक्ट समथिंग विल गिव इसी थीसिस पे हमने कहा कि एशियन पेंट कंपनी अच्छी ही रहेगी वो फिर भी राजा रहेंगे लेकिन 42% जो उनका मार्केट शेयर है अगर उनको 42% मार्केट शेयर रखना है तो ऐसे कम करनी पड़ेगी जैसे हमारे मित्र हैं तेजस वो भी बहुत अच्छी है उन्होंने मेरे को एग्जांपल दिया जमीन होती है आपकी मार्केट शेयर कंज्यूमर फसल होती है आपकी मार्जिन जमीन अगर मैंने आपकी हड़प कर लिया आप फसल नहीं कंज्यूमर कंपनी को जमीन रोक के रखना मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा मेरी मार्जिन चली जाएगी फसल अगर एशियन पेंट को मार्केट शेयर रखना है मार्जिन पे सैक्रिफाइस करना कल ही नंबर आए टॉप लाइन 6% गिरी है मार्जिन गिरी है तो हमारी थीसिस थी कि 55 से 60 रुपया जो एशियन पेंट का ईपीएस है कि एशियन पेंट्स की टॉप लाइन और बॉटम लाइन गिरेगी मतलब एक ऐसी कम ग्रो होगी वो सोचा होगा लेकिन गिरेगी तो हमारी थीसिस वही थी कि यार 60 रुपया ईपीएस 3 साल नहीं रहेगा 60 का गिरेगा फिर वापस आएगा मुझे लग रहा है 18 से 24 महीने में एक नया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा मार्केट से एस्टैब्लिश हो जाएंगे फिर दोबारा ये कम गुड टू ग्रेट फेज में जाएगी अभी ग्रेट से गुड जा रही है करते हैं चीजें डिस्कस करते हैं आप हमेशा एम्बेसडर कार का जिक्र करते हैं जी तो काफी लोग कहते हैं कोडैक मोमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा आज इसी पुड़िया पे बात हो जाए कौन सी कंपनी या सेक्टर इस समय उस कोडैक मोमेंट के थ्रू जा रहे हैं देखिए ये थोड़ा विवाद वाला विषय है इस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ आपको बता के जाऊंगा कि जो मेरी सोच है भारत का टोटल आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करीब अनुज जी $250 बिलियन ऑलमोस्ट 7-8% ऑफ जीडीपी कॉस्ट टू इनकम टिपिकली जिसको हम कहते हैं 50% सैलरीज होती है टिपिकली आईटी तो अगर 250 बिलियन आपकी टॉप लाइन है आप $125 बिलियन की आप तो मैं टिपिकली 2x2 बनाता हूँ आज मैंने 3x3 बनाया अच्छा एक्स एक्सिस है टोटल रेवेन्यू ऑफ आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री मेरे पास जवाब आज नहीं है मेरे पास सवाल है जवाब एक महीने में आएंगे 3 चीज हो सकती है या तो रेवेन्यू डिक्लाइन करेगी या फ्लैट रहेगी या बढ़ेगी दैट इज द एक्स एक्सिस टोटल वेजेस जो 100 बिलियन या 125 बिलियन की सैलरी है जो 30-40 लाख आईटी सर्विसेज के इंजीनियर्स को हम एम्प्लॉय करते हैं वो डिक्लाइन करेगी या फ्लैट रहेगी या ग्रो करेगी अगले 10 साल तो ये 9 बक्से ठीक है अब बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड आपसे एक सवाल अगर $125 बिलियन का हम डॉलर कमा रहे हैं 30-40 लाख की हमने नौकरियां बनाई हैं उसका इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है मुझे लग रहा है 5 से 8 टाइम है कम से कम या बैंगलोर जो बना है ऑफिसेज लोग ले रहे हैं चेयर खरीद रहे हैं कुर्सियां खरीद रहे हैं ड्राइवर है गाड़ियां बिक रही हैं वो मल्टीप्लायर अगर एआई के कारण ये जो कोडैक मूवमेंट किया कोडैक कैसे हुआ वर्चस्व था 50 साल का फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग मशीन पेपर और फोटो सब कोडैक 1976 जिस साल मैं पैदा हुआ था कोडैक में ही डिजिटल कैमरे का इन्वेंशन हुआ कुछ नहीं किया 24 साल बाद कोडैक जीरो हो गई इन 24 months अगर एआई इज दैट डिसरप्टिव मुझे मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है लेकिन 250 बिलियन की रेवेन्यू पे 800 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट है इंडिया में व्हिच इज 20% ऑफ जीडीपी अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर बेस्ट केस इंडिया के सिर्फ ऊपर के 3 बक्से हैं कि हमारी सैलरी ग्रो करनी चाहिए अगर आईटी सर्विसेज का टोटल एम्प्लॉयमेंट अगर ग्रो नहीं किया इकोनॉमी कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे इन्हीं के लिए बहुत गड़बड़ हो सकती है एनीथिंग इन द रेड बॉक्स जहां लेट्स से टीसीएस है टीसीएस कहती है मेरी रेवेन्यू बढ़ेगी मैं नए लोगों को नहीं दूंगा तो टीसीएस की मार्जिन बढ़ेगी टीसीएस का शेयर प्राइस बढ़ेगा इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी बट स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप देखें तो मैं आप वही मैं आपको कह रहा हूं अगले 18 महीने से 24 महीने में एआई में बहुत नौकरियां हैं लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लिखने की जरूरत ही नहीं है
कंप्यूटर ही करेगा, तो क्या आपको 30-40 लाख लोगों की जरूरत है कि 10 लाख लोगों की जरूरत है और 5 लाख एआई एजेंट्स की जरूरत है? आज मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल है। लेकिन अगर कोई कोडैक मोमेंट है इंडिया में, यहाँ मुझे रिस्क लगती है स्ट्रक्चर। तो हमें, आपको, सरकार को, सीईओज को मिलके कुछ करना पड़ेगा। वही मैं, इसीलिए मैं राष्ट्रपति जी की यहाँ फोटो बनाई है, जो आप लास्ट स्लाइड अगर देखें तो मजेदार है। अब एक उनका गाना था ना, मेरा जूता है जापानी पतलून हिंदुस्तानी। तो अभी आप देखिए, हमारी फैक्ट्री की मशीन है जापानी, ठीक है, हमारे एयरक्राफ्ट का इंजन है हिंदुस्तानी रोल्स रॉयस, तेल और हमारा मिग है रूसी, सिर्फ आईटी सर्विस में हिंदुस्तानी। वी नीड मैन्युफैक्चरिंग इंजन। ये तीनों बाकी जो इंजन है ना, वो पहिए हमें चाहिए। आईटी सर्विसेज पे अकेले हम नहीं खड़े रह सकते अगले 10। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। इसकी एनालिसिस अगले 1 महीने में आपके पास बहुत बढ़िया पुख्ता लेंगे। चलिए, तो एक काम करेंगे, फिर 1 महीने बाद दोबारा आपसे बात करेंगे और कुछ और टॉपिक बात करेंगे। और एक शानदार राज कपूर द शोमैन, द ओरिजिनल शोमैन, इस इमेज के साथ ही आज के शो को यहीं एंड करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉन्वर्सेशन में। और एंड आई होप कि हम इस कॉन्वर्सेशन को रेगुलर बनाएं, ताकि इसी तरीके की थोड़ी सी और चीज़ें निकल के आए। तो अब 2 महीने बाद आएंगे आप, अगली बार 2 महीने बाद आपसे फिर दोबारा। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Your stop loss is my entry and your entry is my target. अब ये सुन के बहुत बुरा लगेगा और ये exactly institutions daily basis पे आपके साथ कर रहे हैं। अब इसका solution क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। Institutions को चाहिए होती है liquidity अपने orders को execute करने के लिए, क्योंकि institutions के orders होते हैं बहुत बड़े, बहुत ज्यादा volume के साथ और बहुत ज्यादा intensity के साथ, और उनको अपने कोई भी order को execute करने के लिए counter party चाहिए होती है। और इसीलिए जो pending orders आप और मैं अपने stop loss और targets के हिसाब से लगाते हैं, वही institutions के लिए liquidity बनती है। एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा डबल बॉटम बना था। एक सपोर्ट लेवल पे सारे रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा कि आज यहाँ बाय करते हैं बहुत पैसा बनेगा, बट इंस्टीट्यूशंस के प्लान्स कुछ और थे। स्टॉप लॉस निकाला जाता है और स्टॉक रॉकेट की तरह भाग जाता है, और इसमें रिटेल ट्रेडर ये सोचता रहता है कि भाई मैं क्या करूं। तो इन सब का सोल्यूशन है ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग या इंस्टीट्यूशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को सीखना। हाय, माय नेम इज कारण, हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरे पास 10 साल से ज्यादा का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, और मैं स्पेशलाइज करता हूं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, जहां पर मैं आपको एक 2 घंटे के वेबिनार में सिखाने वाला हूं किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है, और कैसे इस तरीके के मूव्स को कैप्चर करना है। ये है मेरा वेरीफाइड पीएनएल, और ये है एक केस स्टडी।